सो जो पहले जनरेशन के सर्च इंजन थे, वी नो दैट दे रिलाई ऑन टीएफ आईडीएफ या कोसाइन सिमिलरिटी। सो अगर कोई क्वेरी ऐसी आती है मॉई रिजोर्ट, तो जिसमें ये वर्ड ज्यादा बार आ रहे हैं वही पहले आएगी। बट वी नो दैट दिस वाज करप्टेड बाय सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स। वो क्या करते थे कि अपने ही पेज में कई बार ये रिपीट कर देते थे, समटाइम्स विच इज इनविजिबल, यानी कि कलर जो होता था फॉन्ट का वो सेम होता था बैकग्राउंड वाला, तो इट इज नॉट विजिबल टू ह्यूमंस, बट स्टिल जो वेब रोबोट्स होते थे उनको लगता था कि ये पेज का इम्पोर्टेंट है बिकॉज टर्म फ्रिक्वेंसी इसकी हायर है। सो रेपिटेशन सेम कलर में होती थी, इसलिए रिपीटेड टर्म्स गोट इंडेक्स बाय क्रॉलर्स, क्रॉलर उसको इंडेक्स कर लेते थे, ह्यूमंस को विजिबल नहीं होती थी। तो इनिशियल दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन, पहले ऐसे किया जाता था। सो ऑब्वियसली सर्च इंजन्स इवॉल्व्ड, दे नो दैट कि सिर्फ टर्म फ्रिक्वेंसी के बेस पे नहीं जाना, दे इवॉल्व्ड, दे चेंज द थिंग्स ओवर द इयर्स। सो वेरिएंट्स ऑफ कीवर्ड स्टफिंग, जब सर्च इंजन ने मेटा टैग्स देखने शुरू कर दिए तो लोगों ने मेटा टैग्स में भी कुछ ना कुछ डालना शुरू कर दिया। जब सर्च इंजन ने लेंथ को नॉर्मलाइज करना शुरू किया, तो ताकि एक्सेसिव रेपिटेशन को फाइंड आउट कर सके, सो देन दे स्टार्ट यूजिंग द स्टाइल शीट ट्रिक्स एंड अदर थिंग्स। और कई बार वो स्क्रिप्ट के थ्रू, जैसे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, एंड they actually add the things which were not visible to the crawler. Crawler को पहले visible नहीं था, but बाद में add on कर देते हैं। So meta tags सर्च इंजन यूज करते थे to know about कि किस टाइप का पेज है, कितनी बार वो अपडेट होता है। जैसे न्यूज वेबसाइट्स, they say that they are updating after 10 minutes. So सर्च इंजन उसके correspondingly उसको इंडेक्स करते थे। Then there are many spoofing techniques. One of them is the cloaking. So it is the serve fake content to the search engine spider. So once, so web server पे जैसे ही पता चलता था कि भाई कोई क्रॉलर एक्सेस कर रहा है, क्योंकि आपकी वेबसाइट इज बीइंग एक्सेस्ड आइदर बाय क्रॉलर, जहाँ तो क्रॉलर एक्सेस करेगा, जहाँ कोई ह्यूमन यूजर एक्सेस करेगा। इफ इट इज क्रॉलर, देन इफ वी गिव फेक कंटेंट टू द क्रॉलर, जब भी क्रॉलर आएगा उसको तो डिफरेंट कंटेंट दिखाएं। ऑब्वियसली दिस इज अनएथिकल, और ताकि वो इंडेक्स हो जाए, और जब यूजर आएगा तब उसको डिफरेंट कंटेंट दिखाएं। सो दिस इज कॉल्ड द डीएनएस क्लोकिंग। सो जैसे अभी हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना डीएनएस सर्वर है। सो हम अपनी वेबसाइट हमारे डीएनएस सर्वर पे, सो व्हेन यू ओपन pu.ac.in, लेट्स से फ्रॉम योर होम, तो अब इसका आईपी एड्रेस चाहिए होता है। तो आपके घर से जो भी आईएसपी होगा, सपोज यू आर यूजिंग जियो इंटरनेट कनेक्शन, और जियो जो डीएनएस यूज करता है वो अपने डीएनएस से पूछेगा कि pu.ac.in का आईपी एड्रेस क्या है। अब ऑब्वियसली इसको नहीं पता होगा, तो देन दिस डीएनएस विल स्टार्ट आस्किंग अदर डीएनएस। अल्टीमेटली इट विल रीच द डीएनएस ऑफ पीयू, एंड वहां से इसका आईपी एड्रेस पता चलेगा। उस आईपी एड्रेस पे हमारा वेब सर्वर है, जो पीयू का जो मेन वेबसाइट है, और वहां पे index.html पेज है, सो विच इज एक्चुअली इवेंचुअली कम टू योर पेज। बट इन पूरे प्रोसेस में when the crawlers are doing it, if we keep it separate, when user are doing it, if we keep it separate, then we can impersonate. So जब actual document कुछ और है और यूजर को हम स्पैम भी सर्व कर सकते हैं। So whosoever is controlling DNS, they can easily do that. So whenever crawler comes, so क्योंकि ज्यादातर crawler ethical crawlers होते हैं, and they usually tell the web server that okay, I am coming and I am a crawler and I want to access it. तो उस टाइम हम डिफरेंट पेज दें, और जब यूजर आता है तब डिफरेंट पेज दें। So this may happen. This technique is called the cloaking.
और अगर हम DNS सर्वर पे ऐसा करें, then it is called the DNS cloaking. Then there are more spam techniques like doorway pages. So pages optimized for a single keyword. So एक पेज में आपने सेम कीवर्ड ही रिपीट किया हुआ है काफी बार, सो ऑब्वियसली टर्म फ्रिक्वेंसी काफी हाई हो जाएगी. और वेन एवर यूजर ओपन इट, इसमें एक स्क्रिप्ट है विच redirect this page to actual page. So actual page, so obviously जहां पे टर्म फ्रीक्वेंसी आई है इंडेक्स हो जाएगा और सर्चिंग में आना स्टार्ट हो जाएगा, बट जैसे यूजर खोलेगा तो स्क्रिप्ट उसे एक्चुअल पेज पे ले जाएगी. So this, if you are using this thing, then these are called the doorway pages. So doorway pages are used to for getting indexed, and but they are not actual pages. User cannot see it because script अपने आप ही रन होगी और उसको दूसरे एक्चुअल पेज पे ले जाएगी. Then there are link spamming. So link spamming is there are mutual admiration societies like suppose uh, in our PU website, if we start adding links for our those websites which we found it good, जिनको हमें लग रहा है कि ये अच्छी वेबसाइट्स हैं, या तो उससे क्या होगा, अगर हमारी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी है तो पेज रैंक एल्गोरिथम जिन वेबसाइट का लिंक हमारी वेबसाइट पे है उनकी रैंकिंग भी अच्छी हो जाएगी. सो दिस विल आल्सो इंक्रीज. सो इफ आई एम यूजिंग दिस कि एक अच्छी वेबसाइट में ऐसे लिंक डाल के उन लिंक्स की रैंकिंग इंक्रीज करनी है, दिस इज कॉल्ड लिंक स्पैमिंग. सो दिस समटाइम्स हैपेंस म्यूचुअल एडमिरेशन के कारण भी. हाँ भी मैंने सपोज मैं ऐड कर दूं कुछ एनजीओस के नाम, ऑब्वियसली इन एनजीओस की रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी. एंड नाउ व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज आई एडमायर दिस. So sometimes this is done because of this. Sometimes it can be done by having hidden links which are not visible, but crawler को लगेगा कि PU is a good page, so these pages may be good as well, and accordingly उनको जितने भी हैं उनको हम बार बार अवार्ड करेंगे. सो उनके जितने ज़्यादा पेजेस होंगे उतनी उनकी रैंकिंग इंप्रूव होती जाएगी. And then there is another technique which is called the domain flooding. So numerous domain that point to redirect to a target page. Suppose किसी एक कंपनी का पेज है और हमने इसको पहले सर्च इंजन्स में लेके आने. So then I create thousand of dummy pages. सपोज ये किसी शू कंपनी का पेज है और मैं चाहता हूँ कि जब भी लोग शू टाइप करें तो ये वाला पेज पहले 10 में है. सो आई विल क्रिएट 1000 डमी पेजेस विच आर पॉइंटिंग टू दिस. सो क्रॉलर को लगेगा कि ये पेज काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर आर मेनी पेजेस विच आर पॉइंटिंग टू दिस. एंड इन दिस वे पूरा ग्राफ क्रिएट किया जा सकता है टू फूल द पेज रैंक एल्गोरिथम. So in this way, these kind of techniques are used to improve the ranking of the particular page. So ऐसे dummy pages बना के और dummy e-commerce sites बना के जहाँ पे वो शू को लिंक किया जाएगा, and वहाँ से फिर robots ही purchase कर रहे हैं, and robots are increasing the frequency on the full access to this page, so that गूगल को लगना शुरू हो जाएगा कि ये पेज काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैनी पीपल आर डूइंग दिस, एंड इसकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी. सो दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स आर कॉल्ड द लिंक स्पैमिंग टेक्निक्स. सो दीज आर वेरी पॉपुलर एंड टू मेक द crawlers full. Then there are web robots which generate the fake query stream. As I told you कि इंटरनेट पे 50% जो ट्रैफिक है दिस इज बिकॉज ऑफ रोबोट्स, मे बी इवन हायर होगा. सो यूजर एक्सेस नहीं करते, दे जनरेट फेक क्वेरी स्ट्रीम्स. सो रैंक चेकिंग, सो दैट्स व्हाई यू माइट हैव सीन देयर इज कैचपा used to tell I am not robot. So there are many things which are used to कि काफी कंपनीज ने तो अपने पेजेस में लॉगिन बनाया हुआ है
and then they store the cookies, and then they try to recognize whether it is a robot or not. So there is fake query stream, rank checking programs, and then there is uh, फेक क्वेरी के साथ ही कर्व फिटिंग रैंकिंग प्रोग्राम्स हैं. सो दे ट्राई टू जनरेट मल्टीपल कर्व्स इन द ग्राफ्स. सो रोबोट्स ऐसे कई क्वेरी स्ट्रीम बनाते हैं और मल्टीपल ग्राफ बनाते हैं, एंड देन दे ट्राई टू गिव वेटेज टू वन थिंग मोर. So all of these things you might have seen in very popular in the social media. सोशल मीडिया पे तो यू माइट हैव हर्ड कि फॉलोवर्स ही जितने किसी सेलिब्रिटीज के हैं, सो मोर देन 80% तो उनके फेक फॉलोवर्स होते हैं, विच आर नॉट एक्चुअली ह्यूमंस. सो इस तरह से जो कुछ भी आपको वेब पे दिख रहा है, सो इट मे बी फेक, एवरीथिंग इज फेक. इवन जो न्यूज कंटेंट है दैट इज आल्सो बीइंग जनरेटेड फेक. सो अगर आप गूगल न्यूज पे जाओगे तो news.google.com पे, सो उस पे राइट हैंड साइड पे एक सेक्शन होगा वेयर दे रिकॉग्नाइज फेक न्यूज एवरी डे, और उसमें कुछ पॉपुलर ही आते हैं. वैसे तो फेक न्यूज काफी जनरेट होते हैं, बट यू कैन सी दैट कि जो आपके व्हाट्सएप मैसेजेस या ट्विटर पे आ रही हैं, सो गूगल ट्राई टू रिकॉग्नाइज देम एंड पुट इनटू द देयर राइट हैंड बॉक्स. बट कई बार उनके मेन पेज पे वही फेक न्यूज किसी न्यूज़पेपर के अंदर भी ने भी टारगेट की होती है. So that's why these robots are creating news and these are happening. So the recent example is the President Pranab Mukherjee's death case. So that news was created by the bot, or then it was circulated in the media by many big publication houses. So ultimately, it was removed after 2 or 3 hours. So initially, एक बार ऐसा, so that news was generated. So these kind of news are being created and generated by these things. So but these indexers, so they have started a war against the spam. So we know that कि आपके पास जो कंटेंट आ रहा है, so email में तो spam अब you might have seen कि 99% रिमूव कर ही दिया उन्होंने. अब बड़ा कम आपकी ईमेल में स्पैम आ रहा है. अदरवाइज एक टाइम पे आई नो डैट अराउंड 2005 और सो मेरे पास जितनी मेल्स आती थी ऑलमोस्ट 99% स्पैम ही होती थी. सो ओनली 1% आर गुड इनफ, बट नाउ इट हैज बीन चेंज. So Google is doing a lot of stuff. So they try to find quality signals. They try to know the authoritative pages. So they try to get the word from authors, users who are reading. So continuous data which is being fetched by these. News website आपने देखी होंगी कि वो they ask you to store the cookies just to know that whether you are a robot or not. तो वो cookies के थ्रू बार बार चेक करने की कोशिश करती हैं. So they have policy of URL submissions. So अगर आपको लग रहा है कि आपकी वेबसाइट गूगल लिस्ट नहीं कर रहा, तो यू कैन हैव दे हैव अ पॉलिसी दैट यू कैन सबमिट योर यूआरएल. तो एंटी रोबोट टेस्ट करेंगे, सो दैट वंस इट इज प्रूव्ड दैट योर वेबसाइट इज नॉट ए रोबोट, सो देन इट विल बी यूज्ड इन द इंडेक्सिंग ऑफ गूगल. लिमिट्स ऑन मेटा कीवर्ड्स. ऐसा नहीं कि मेटा कीवर्ड्स आप सेम टर्म को आप मिलियन टाइम्स लिख दो to improve the ranking, so that is not possible. Robust link analysis. So ignore statistically implausible linkage. So किसी वेबसाइट पे, suppose पीजू की वेबसाइट पे मैं if I create 1000 links immediately, so then they will start doubting it कि एक वेबसाइट पे 1000 links कैसे आ गए. Then they do the use link analysis to detect spammers. So यहाँ पे machine learning techniques start coming into pictures. So they create the clusters and link analysis and see that how the behavior is, how the people are moving towards, कैसे वो statistics कैसे change हो रहे हैं. So ये machine learning techniques spam recognition में काफी helpful है. email में जितना भी spam recognize होता है, so they have a very good machine learning techniques over the years. So these are keep on improving. Family friendly filters, so they recognize your own personal graph.
सो उस ग्राफ से जो अगर कुछ आपको कंटेंट आ रहा है तो उसको वेटेज ज़्यादा दी जाती है. एनएलपी एनालिसिस इज नाउ बेटर हो गया, बट सेम जो फेक जनरेटर है वो भी बेटर हो गए. नाउ फेक जनरेटर जितने भी हैं, ऑब्वियसली इफ फेक न्यूज जनरेटरीज these are done by good coders only. So if they behave responsibly, obviously they won't generate the fake news. But we know that coders are also the source of all the viruses which are happening on the computers or networks. So वो भी कोडिंग से ही आते हैं. For images, flash tone detector, source text analysis. So these people have improved a lot. Then human intervention is always there. Still, it is there to blacklist the things, to audit the top queries, to address the complaints. Like Twitter, immediately they have a very large staff. ट्विटर फेसबुक इनका स्टाफ है, और जैसे ही रिपोर्टिंग होती है तो दे इमीडिएटली एड्रेस दैट कंप्लेंट by the humans, not by the robots, and they try to detect the suspected patterns. So all of these, they have started the war against spam, but still, you know that on social media it is very difficult. Every now and then you can see that there is a lot of bad pages, phishing pages, bad news. So everything is happening on this. So even पीछे ट्विटर्स भी हैक हुआ था. इवन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अकाउंट से भी फेक ट्वीट्स आई थी, एंड नॉट only from Indian president, but from all the Indian prime minister, but from all the presidents are all around the world. So this keep on happening. Even when these kind of servers can be hacked, then normal servers like web servers like GoDaddy, where lot of pages are there, so these are hacked on daily basis, and all the website that you cannot believe that whether you're looking at the actual page and or the phishing page. Now the size of web, it is actually you can say infinite, because the by the time when we are speaking, it is not increasing only in MBs, it is not increasing in GBs, it is not increasing in TBs, it is increasing in petabytes. So जैसे जैसे हम अभी लेक्चर में भी कर रहे हैं तो petabytes में increase हो रहा है. So you cannot even count it. Something which is not countable, by the time you count it, it will be it may have increased to multiple folds. So dynamically content change हो रहा है, स्टैटिक नहीं है. जो अभी कंटेंट दिख रहा है that will change. लोगों के अपने कैलेंडर्स, जो ऑनलाइन कैलेंडर्स है, they are being changed, मीटिंग्स चेंज हो रही हैं. So there's so many things. So whole our human activity, whatever you are doing, is also recorded on the web. So everything is on the web. Like even the now lecture which I am giving, even if I am recording it, but still Zoom is also recording it. So it is not only that I am recording it. So they are recording it without my knowledge. So they will use it later on for the machine learning and their deep learning things. So static web doesn't change much over the time. So mostly due to mirroring. So this is only about 30%. And there are many web servers which are seldom connected. So for example, in UIT, I have 2 web servers, but we use it for testing only. So maybe the Google visit these websites maybe once in a month or so. So they are not connected on regular basis. So who cares? The media and consequently the user, the search engine design, engine crawl policy, किसको पहले crawl करना है, किसको नहीं करना है, impact कितना होगा recall करने का, whether the pages which I am using it, whether they are suppose मैंने DIC की website host की हुई है, if I am changing it, how much does it take for a Google to index it?
सपोज अगर आज मैं एक वेब पेज चेंज कर देता हूँ, वेब सर्वर भी मेरा ही है, मेरा अपने अपने वेब सर्वर पे चेंज किया है, वहीं पर होस्टेड है. Now, when I am opening it, Google will get to know how much time does it take. Because एक दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहे हैं, how much time does it take? Suppose to know this, अगर मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ अपनी DSC की वेबसाइट पे and I put a very strange keyword which Google may not have listed it. अब कितना टाइम लगेगा गूगल को उसको इंडेक्स करने में कि वो स्ट्रेंज कीवर्ड गूगल सर्च कर लेगा. सो वी हैव फाउंड, हमने कई बार ऐसे टेस्टिंग की हुई है, फाउंड दैट समटाइम्स अराउंड 15 डेज लग जाते हैं गूगल को इंडेक्स करने में. सो गूगल इज नॉट, देयर रोबोट्स आर नॉट कमिंग टू आवर वेब सर्वर फ्रीक्वेंटली फॉर क्रॉलिंग. नाउ हाउ कैन वी अटेम्प्ट टू मेजर्स? सो अभी दिस वुड बी योर असाइनमेंट एज वेल, सो आपने ये केयरफुली सुनना है कि कैसे करना है. सो रिलेटिव साइज ऑफ सर्च इंजन, सपोज आपको दो सर्च इंजन को कंपेयर करना है, लेट्स से गूगल और बिंग को, जहां छोटे सर्च इंजन भी कंपेयर कर सकते हो, जिसमें स्कॉलर डॉट गूगल और बिंग की जगह माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च. सो माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च को भी आप पिकअप कर सकते हो. सो दीज आर द स्मॉलर कलेक्शन एज कंपेयर टू द फुल वेब. या इवन छोटे भी आप सर्च कर सकते हो, स्कोपस एंड स्कोपस का अपना सर्च इंजन है, देन एल्सवेयर का अपना सर्च इंजन है. So you can pick up two search engines. So the notion of page being indexed is reasonably well defined. So already there are many problems. Document extension, for example, engine index pages not yet crawled by indexing anchor text. So काफी pages index किए होते हैं but अभी crawl नहीं किए होते, उनका content नहीं देखा होता. Document restriction, all engine restrict what is indexed. So पूरे का पूरा पेज, सपोज आपके पेज में 10,000 वर्ड है. So Google is not going to read all these 10,000 words. Google will try to read only first few thousand, let's say 2,000 words to know about your page, not the full page. So इसलिए important content हमें ऊपर रखने की जरूरत होती है. So no crawler read full web page, सिर्फ smaller part of web page read होता है. Now coverage of one search engine relative to another particular crawling process. Suppose आपने compare करना है दो search engines को. Suppose एक आपने गूगल स्कॉलर उठा लिया और एक माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च उठाया. तो स्टैटिकली इंडेक्सेबल वेब इज व्हाटएवर सर्च इंजन इंडेक्स. तो स्टैटिकली इंडेक्सेबल वेब को हम वही कहते हैं कि जो सर्च इंजन इंडेक्स करता है. जो सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करता है, दैट इज डायनेमिकली चेंजिंग एंड व्हिच सर्च इंजन थिंक्स इज नॉट नेसेसरी टू चेंज इंडेक्स. अब इसमें डिफरेंट इंजन्स हैव डिफरेंट प्रेफरेंस. कई इंजन्स में तो मैक्सिमम यूरल डेप्थ मैक्सिमम 10 लेवल तक का ग्राफ बनाते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जाते. कईयों में मैक्सिमम होस्ट काउंट कि कितने उसको पॉइंट कर रहे हैं उस पे ऊपर भी पॉइंटर होता है. यूजुअली गूगल में तो ये 100 तक जाता है. देन दे हैव एंटी स्पैम रूल्स. कई को लगता है कि जितना बड़ा ग्राफ कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है तो उसको स्पैम में कैटेगरी में ले आते हैं. देन प्रायोरिटी रूल्स, किसी चीज को प्रायोरिटी देते हैं, किसी को नहीं देते. सो दैट्स व्हाई इंडेक्सिंग डिफरेंट हो सकती है. सो डिफरेंट इंजन्स इंडेक्स डिफरेंट थिंग्स अंडर द सेम यूरल. एक यूरल के कोरस्पॉन्डिंगली जो समरी आ रही है, जैसे आप गूगल में जो समरी देख रहे हो और जो बिंग में समरी देख रहे हो, दैट समरी कैन आल्सो बी डिफरेंट सेम यूरल में. सो दैट समरी और दैट कुड बी डिफरेंट. इवन एक सेम पेज में भी अब्स्ट्रैक्ट में से जो समरी उठाते हैं तो वो भी डिफरेंट हो सकती है. सो सम recognize frames, meta keywords, document restriction, document extension. So based on this, हर सर्च इंजन डिफरेंट बिहेव करता है. सपोज अब आपने चेक करना है कि रिलेटिव साइज ऑफ टू इंजन्स, आपने दो सर्च इंजन को कंपेयर करना है. सो सैंपल यूआरएल रैंडमली फ्रॉम ए में से आपने यूआरएल निकालना है, कोई भी क्वेरी देके. आई विल लेटर शो कि कौन सी क्वेरीज दे सकते हैं. सो लेट्स से ए में से ये पेज आए, ऐसे बी में से पेज, ग्रीन वाले पेज बी में से आए. देन इनके कॉमन पेज निकाल लो, समथिंग विच इज कॉमन.
जो दोनों में आ रहा है। सपोज दो पेज कॉमन आ रहे हैं, सो इसको साइज ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो, एक ये वैल्यू आ गई, फिर साइज ऑफ बी से मल्टीप्लाई करो, एंड देन ऑब्वियसली जब साइज ऑफ ए साइज ऑफ बी इनको इक्वेट करो, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन ट्राई टू फाइंड द size of A divided by size of B. So this give you that कि size of A is 1/3 of size of B. So this equation can be taken. इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक क्वेरी देनी है, यानी कि एक सैम्पलिंग क्वेरी देनी है, और आपको सैंपल कलेक्ट करना है कि भी सर्च इंजन बी में से कौन से पेज आ रहे हैं। लेट से काफी आ रहे हैं, पहले 20 उठा लो, और इसमें भी पहले 20 या उसमें उठाओ, एंड देन यू पिक इट अप कि भी कौन से कॉमन आ रहे हैं, कितने कॉमन आ रहे हैं, एंड उसके बेस पे आप ले सकते हो, या टोटल नंबर कितने आ रहे हैं उनमें से पहले 20 में से कितने कॉमन आ रहे हैं। सपोज टोटल काफी आ रहे हैं, बट पहले 20 में क्या कॉमन आ रहे हैं उसकी इंटरसेक्शन करके देन यू कैन कंपेयर द साइज ऑफ टू सर्च इंजन्स। So then another is the sampling URLs. Generate a random URL and check for containment in each index. कोई भी एक random URL create करो, and obviously need not to be popular, less popular, जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। सपोज पीयू की साइट से किसी ऐसे लिंक को उठा लो, ऐसा पेज उठाओ विच इज नॉट पॉपुलर, एंड देन चेक कि वो लिस्टेड है कि नहीं है। सो रैंडम यूआरएल्स आर हार्ड टू फाइंड, so obviously enough to generate random URL contained in a given engine. So कोई भी random URL आपने देखा है, आपने सपोज गूगल में देखा है कि रैंडम पेपर या रैंडम URL, जब कोई भी आपने पेपर देखा है, चेक कि वो दूसरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। सपोज आपने गूगल स्कॉलर में एक पेपर उठाया जिसकी साइटेशन काफी कम है और जो रिसेंट है, नो चेक माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च में सेम पेपर है कि नहीं है। जब माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च में से एक पेपर उठाया और जो काफी लेस पॉपुलर है, चेक करो गूगल में है कि नहीं है। तो इससे आप उनके रिलेटिव साइजेस ऐसे कंपेयर कर सकते हो, जहां ऐसे कीवर्ड दिए जिनसे रिलेटिव साइज कंपेयर कर सकते हो। यू कैन आल्सो रैंडमली वॉक एंड चेक द आईपी एड्रेस, सो जिसमें आप अपना एक स्क्रिप्ट लिख सकते हो एंड चेक कि पहले 10,000 रिजल्ट्स में से और गूगल में से और 10,000 रिजल्ट्स माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक रिसर्च में से कितने कॉमन है। सो हाउ मेनी ऑफ दीज आर कॉमन। सो इस तरह से भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। सो बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस आर पॉपुलर इन द रिसर्च, रैंडम क्वेरीज, रैंडम सर्चेस, ये दीज आर अप्रोच 1। अप्रोच 2 में हमें आईपी एड्रेस हमें पता होना चाहिए जहां हम रैंडम वॉक्स। सो अप्रोच 2 इज मोर स्क्रिप्ट बेस्ड and approach 1 is user is specifically giving these things. So random URLs from random queries, so generate random query, but कैसे generate करोगे आप। so lexicons में तो काफी वर्ड्स होते हैं crawling के लिए, so आप you have to generate conjunctive queries। for example ये वाली query भी generate कर सकते हो, vocalist and RSI, get 100 result from URLs from engine name। इसके जगह आप जिस फील्ड में रिसर्च कर रहे हो, जो आपका थीसिस है, उसके कीवर्ड देके देखो आप। गूगल स्कॉलर में दो पहले तो, फिर सेम कीवर्ड मे बी 3-4 कीवर्ड गिव इनटू द सर्च इंजन भी। पहले गूगल स्कॉलर में दो और इसमें से जो सबसे लीस्ट साइटेड पेपर है उसको देखो कि वो माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो इस तरह से आप दोनों में चेक करते जाओ एंड देन चेक कि सर्च इंजन ए डिवाइड बाय सर्च इंजन बी कि कितने अच्छे पेज जो आपको रेलिवेंट मिलते हैं ए में एज कम्पेयर टू बी। सो दैट गिव्स यू द क्लैरिटी दैट विच वन इज बेटर, कि विच सर्च इंजन इज बेटर। तो इन दिस वे यू कैन डू दिस। सो व्हाई आई एम सेइंग कि आप नॉर्मल गूगल पे सर्च करने की वजह scholar.google पे करो, बिकॉज नॉर्मल गूगल
इज वेरी बिग। सो गूगल स्कॉलर पे आपकी क्वेरीज कम हो जाएंगी। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक उस पर सर्च करो आप। सो माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक रिसर्च, इनकी भी अपना वेबसाइट है, जहाँ scopus.com पे चले जाओ, इनकी अपनी वेबसाइट, ये सारे रिसर्च पेपर के लिए हैं। एंड देन यू कैन कंपेयर कि कितने अच्छे ये सर्च इंजन है। यू कैन कंपेयर दीज सर्च इंजन बेस्ड ऑन, जो आपको सर्च पेपर किसमें ज्यादा मिलते हैं। ये पार्ट क्लियर है सबको?